Good morning, grade 5 students. Today we are going to talk about word problems based on multiplication. So let's see some steps which we have to follow first for solving the word problems. So step 1, understand the question. So first of all, you need to understand the question, what exactly the question is. Then second step 2, find the facts or information. Whatever the information or facts is given in the question, you just find out first what all things are given to us, then you have to write there in solutions. What about step 3? Step 3 is decide what to do. Okay, after finding out facts and information, we have to decide what exactly we have to do here: addition, subtraction, multiplication or division. So then we will decide according to the facts and figures. Step 4, solve the problem, then we will solve it. Step 5, check the answer. Checking of the answer is not compulsory, but we can check by putting extra efforts. For addition we check by using subtraction, and for multiplication we check by using division. So it's not necessary, it's not compulsory, but it is one of the step. Check the answers. So let's see one example to make it understand better. A potter makes 4500 pots in a day. How many pots does he make in 1 year? Okay, so let's understand the question first. Potter makes 4500. एक पॉटर है, कुम्हार है, जो 4500 पॉट्स बनाता है इन अ डे, एक दिन में 4500 पॉट्स वो बना रहा है. हाउ मेनी पॉट्स डज ही मेक इन 1 ईयर? 1 ईयर मीन्स यहाँ पर बहुत सारे दिनों की बात हो रही है, और यहाँ पे हमें एक ही दिन का दिया हुआ था. जो फैक्ट और फिगर जो दिया हुआ है, हमें एक ही दिन का दिया हुआ है ये, और हमें यहाँ पे 1 ईयर मतलब कि 365 डेज की बात हो रही है. सो हम यहाँ पे पता करेंगे व्हाट हमें डिसाइड करना होगा, हमें करना क्या होगा यहाँ पर. सो हमें फैक्ट्स और फिगर तो मिल गए. अ डे 4500 और अ ईयर, ये हमारे फैक्ट्स एंड फिगर से जो हमें मिल गए. अब हमें डिसाइड करना है मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें या डिवाइड करें. सो आई होप यू ऑलरेडी नो कि अगर हमें 1 का डेटा दिया होता है, अगर 1 का इन्फॉर्मेशन दी होती है एक चीज़ की, एक थिंग की, और हमें बहुत सारी चीज़ों का निकालना होता है, तो वी ऑलवेज गो फॉर मल्टीप्लिकेशन. और हमें जब बहुत सारा का दिया होता है डेटा या इन्फॉर्मेशंस, और हमें एक का फाइंड आउट करना होता है, तो वी गो फॉर डिवाइड. सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व by using multiplication. Number of pots made by a potter in a day 4500, number of days in a year 365 days. So in 1 year or 365 days, number of pots made, कितने pots बनाए जाएंगे? तो we'll directly multiply 4500 pots with 365 days. तो 4500 pots into 365 days. So as we have multiplied here, 4500 is multiplicand, 365 is multiplier. So you already understood this concept, how we multiply. So in this way we can find out the product. So what exactly the answer it is? It will be ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So 16 lakh 42,500 pots made by the potter in 365 days. So I hope it is very much easy for you people. Just take care of the steps, read the question carefully and find the answer. So thank you so much for today's topic.